think of, including companies who have been investors in India for well over a century. And the amount of interest that that event had, and a photo op with the Commerce and Industry Ministry of India. I've been on previous such reporting assignments. I've covered commerce, but usually I haven't seen that kind of interest. So I wanted to tell the audience this, and I want to begin from there. If that is the level of interest and interest towards investing in India, how do you see the engagement with the world as we stand at this pivotal moment? Thank you, Siddharth. But before I go forward, just 2 data points. One, I want to thank you for this outstanding initiative to suggest 100 big ideas. This is exactly what we are looking for. This is the need of the hour today. And before coming here, my last meeting was with CII, where I was asking them for exactly this thing. That what should we do so that we prepare India in the Amrit Kal, in our journey to Viksit Bharat, to make life easier for businesses, to make it enjoyable to do work in India, for making it easier for the lives of the common man. And we want any and every idea to come on the table. We want to have out-of-the-box ideas. We want to have outlandish ideas. We want to experiment with the bold. And thank you so much for this initiative. Thank you Truly very appreciate it. The second point you just mentioned was you were thanking me for sparing my time. Maybe that thank you should go to Mr. Rahul Gandhi and the Congress. Because with Parliament not functioning as it should be doing, with debate and dialogue and discussion on bills, raising issues of public interest, taking up issues of concern, discussing the very sad tragedy in Uttarakhand, discussing ways to make India grow faster and better and bigger, working together for a better future for the children of India. We find them disrupting Parliament, making fake narratives, exploding a bomb which probably never took off. Probably just like the Pakistan attacks on India. The Congress comes up with arguments which have no, as they say in Hindi, na sir na pair. और ये इतने दुर्भाग्य की बात है कि पार्लियामेंट जो फोरम जनता ने दिया है, जनता के वोट से हम चुन के जाते हैं, उसमें हमें बजाय कि जनता के समस्याओं का, जनता के विषयों का, देश के भविष्य की बात करने के, हम पूरे समय डिसरप्शन और डिसऑर्डर ही देखते हैं. तो एक प्रकार से धन्यवाद उधर जाना चाहिए. बट टू योर क्वेश्चन, world keeps evolving. International trade keeps finding new pathways. And what we are seeing today is possibly a churn that is bound to happen over every few years. Over every few years, new countries come up, some countries go down. This is a part of history of nations. And I think this is India's time. ये भारत का समय है. और अब जो मेरे आँख के सामने दिख रहा है, जिस प्रकार से कल माननीय प्रधानमंत्री ने उत्साह दिया है पूरे देश को, जिस प्रकार से पूरे देश का मनोबल बढ़ाया है, जिस प्रकार से उन्होंने देश को आह्वान किया है कि अब ये देश झुकने वाला नहीं है, किसी के सामने घुटने नहीं टेकने वाला है. अब भारत के किसान हो, भारत के पशुपालन के साथ जुड़े हुए लोग हों, हमारे खुदरा व्यापार हो, हमारे छोटे उद्योग के लोग हों, सूक्ष्म या लघु उद्योग से जुड़े हुए उद्यमी हों, अब इनके हितों को चिंता करने की जरूरत नहीं. भारत अब देश के चिंता करता है, जनहित और देशहित प्राथमिकता से संभालता है, और ये नया वर्ल्ड ऑर्डर में भारत का स्थान रहने वाला है. आप इस नए वर्ल्ड ऑर्डर की बात कर रहे हैं,
प्रधानमंत्री का आपने जिक्र किया और प्रधानमंत्री ये कहते हैं कि जब भी कोई उन्हें पत्थर मारता है तो वो उस पत्थर को पायदान बना देते हैं और आगे ऊपर चढ़ते हैं। इस समय जो भारत को पत्थर मारे जा रहे हैं उसको आप किस रूप में देखते हैं? क्योंकि लेट्स टॉक अबाउट थ्री बिग डेवलपमेंट्स वेयर यू आर लाइक अ मैन ऑन अ मिशन। You've concluded a deal with the United Kingdom. You're concluding a deal with the European Union, and you recently said it's so near and yet so far. And of course, there is the United States of America, 25% plus 25% imposed. How do you look at आपदा में अवसर here? पहली बात तो मुझे तो कोई पत्थर दिख नहीं रहे हैं ऐसे हमारे सामने। मुझे लगता है कि देश का मनोबल भी बहुत ऊंचा है, बहुत प्रबल है और देश में सामर्थ्य भी बहुत है। मैं आपको 2-3 उदाहरण देता हूं जिससे आपको भी ध्यान में आएगा इस देश की ताकत क्या है। आप याद करिए 1999 को एक पूरे दुनिया में खलबली मच गई थी that the sky is going to fall on the world's head. And I am referring to the Y2K moment. 31st December 1999, 12 midnight, the whole world had assumed and were convinced. All the Western developed world, the very so-called evolved and intellectual people were all convinced that on 31st December 1999, 12 midnight, all systems will crash, which they call the Y2K bug. और ढेर सारे लोगों ने हजारों करोड़ रुपए खर्चे उसकी तैयारी में। तभी अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी। अटल जी ने इसको अवसर देख लिया, पूरी हमारी आईटी इंडस्ट्री को सहयोग किया। तभी आपको याद होगा सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स आए थे, एसटीपीआई, अलग अलग प्रकार से इंडस्ट्री को सपोर्ट भी किया और साथ ही इंडस्ट्री को छूट भी दी। सरकारी इंटरफेरेंस आईटी सेक्टर में एकदम खत्म कर न्यू टेलीकॉम पॉलिसी लाए जिससे डिजिटल कैपेबिलिटीज भारत की बढ़ी। और उसके बाद कुछ होना तो था नहीं, भारत के लोग तो समझदार हैं। हमने ऐसे कई मिलेनियम देखे हैं चेंज होते, हमारा इतिहास तो हजारों साल का है। तो भारत में किसको चिंता नहीं थी, पर हमको अवसर मिल गया, हमने अवसर का पूरा फायदा उठाया और उधर से आज तक हमारी आईटी इंडस्ट्री ने पीछे नहीं देखा है। आज $300 बिलियन की लाखों लाखों लोगों को नौकरियां, भारत को इतना बड़ा फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग, एक बड़ा सेक्टर खड़ा हो गया। इसी प्रकार से कोविड को देख लीजिए। कोविड में भी तो दुनिया ने भारत को राइट ऑफ कर लिया था। कई लोग तो सोचते थे यहां भुखमरी से ही लोग मर जाएंगे। कई लोगों को था कि यहां पे तो वैक्सीनेशन संभव ही नहीं है। $30 का एक वैक्सीन था, $30, और वो भी हम जब खरीदने को तैयार थे तो दे नहीं रहे थे। बोलते हैं कि एक्सपोर्ट कंट्रोल्स नहीं थे, लेकिन इनडायरेक्टली रेगुलेशन से वो अपने ही आपस में ही, अमीर देश आपस में ही बांट रहे थे। भारत में इतना सामर्थ्य था कि ना सिर्फ हमने वैक्सीन अपने खुद का बनाया, उसकी मैन्युफैक्चरिंग यहाँ पे की, उसका शोध यहाँ पे किया, नवाचार इनोवेशन यहाँ किया, और मैंने तो भारत बायोटेक का वैक्सीन लिया। माय वाइफ टोल्ड मी कि मेरे बच्चे भी और मेरे पेरेंट्स भी, दोनों ने बचपन से भारत बायोटेक के वैक्सीन यूज किए, तो हम भी वही लेंगे। तो भारतीय है, अपने भारत के खुद का शान है। और हमने भारत का ही सिर्फ नहीं 250 करोड़ वैक्सीन लगाए मुफ्त में। दुनिया के 100 से अधिक देशों को मुफ्त में वैक्सीन दिया। गरीब देशों को जिनको और कोई वैक्सीन नहीं दे रहा था, भारत ने दिया। दुनिया में लोग, और ये मैं आई विटनेस अकाउंट्स बता रहा हूं, न्यूयॉर्क जैसे शहर में डिपार्टमेंट स्टोर्स वैंडलाइज हो रहे थे।
यूरोप के कई देशों में सड़कों के ऊपर शव पड़े हुए दिखाई देते। भारत में एक व्यक्ति भूखमरी के कारण नहीं गया. Not one death due to starvation in the worst pandemic the world had ever seen. And every state has confirmed this in writing to me. Not one person has died because of starvation. 80 crore people got twice the ration, which means trains ran continuously, which means logistic systems ran, which means our farmers produced. आखिर हम आत्मनिर्भर बने हमारे किसानों के अन्नदाता के सामर्थ्य के ऊपर, which means electricity was available round the clock. क्योंकि our trains are now running on electricity, 95%, almost 90-95%. If electricity companies ran, the coal mines ran. Keeping social distancing and all the COVID protocols, Right. we converted COVID to an opportunity. तो जितनी आपदाएं आप लोग को दिखती हैं, उनको सबको ले आइए भारत में. भारत एक प्रकार से सीता मैया की तरह और अच्छी तरीके से उभर के कोई अग्नि परीक्षा हो जाए, भारत इसमें विनर ही निकलेगा. अग्नि परीक्षा हो जाए, भारत विनर निकलेगा. This is calls for a round of applause. But Piyush, I want to ask you, since you connecting previous challenges with how we dealt with it, how do you think we as a nation will deal with this challenge of deglobalization and how the trade order is being completely dismantled? And what do you think is the playbook going to be? How are you going to tackle this, including these penal tariffs on India imposed by the US? I don't see any deglobalization. I see countries restructuring their trade routes and their trade partners. And I'm quite confident this year India will do more exports than we did last year. And you already have mitigated, all factors put in place. BRICS becomes stronger? Well, I think these are questions you should ask the Honorable Foreign Minister. But I can only talk about trade and commerce. India's exports in the current year will be more than they were last year. Piyush ji, how do you describe the state of India's economy, particularly because someone called our economy a dead economy recently? कौन से पिक्चर का गाना था, समझने वाले समझ गए और ना समझे? I think it's so sad. The whole world is looking up to India. The whole world recognizes us as the fastest growing large economy. We are contributing 16% to global growth. Our inflation is amongst the lowest in the world. Compared to other emerging market economies, our currency, our foreign exchange reserves, our stock markets, our macroeconomic fundamentals are the best. The world recognizes it. You said so yourself during your visit with me. The world wants to come and work in India. The world wants to work with these 1.4 billion young, dynamic, enterprising, aspirational Indians. They recognize the talent, the skill that young India has. So India's got a very bright future. I think parroting a negative narrative by the leader of the opposition is a matter of shame. I condemn him for that. And frankly, the nation will never forgive Mr. Rahul Gandhi for this kind of very, very demeaning comments about the great story that Bharat is demonstrating to the world. You recently concluded a very positive trade agreement, as they say, with the United Kingdom. With the EU, if we were to get into some specifics, because you said so close and yet so far. So how do we speed up to get that yet so far, bridge the gap? और ये जो negativity लोग फैलाने की कोशिश करते हैं, dead economy type, हमारे ही देश में अगर parrot करें उसको, does this have an adverse impact overseas?
First of all, negotiations are done in the negotiating room, so we won't be discussing negotiations and negotiating strategy here. But I think any such statements like the one we referred to will automatically die if people like your channels, and you claim to be one of the highest viewed channels, right? The highest viewed, The the India best. Today group. The If you stop showing this fake propaganda, and if you stop giving time to such negative stories or negative mindset that some people display, automatically this will be a dead issue. And as regards the foreign countries or other countries in the world, they go by facts and figures. They don't even recognize the gentleman you were saying is making these disparaging comments despite being the leader of the opposition in India. I think somehow he has made up his mind that all his life he is going to remain in opposition. Piyush, I want to turn the attention of our audience here and those who are tuning in currently to the broader vision with regard to our playbook for global trade. I think in the last 1 year, you must have maybe had conversations with 24 countries for global trade or more. So if I were to ask you by 2030, 2035 or 2047, what would be the shape of India's engagement with the global trading blocs, and how many free trade agreements would we have? Just one quick point. You have made it clear to us how the previous round of free trade agreements was with economies that were still developing and how you are now pursuing a developed strategy. Can you give us that overview? Well, I think India today is much stronger, much more self-confident, much more respected. We have a decisive leader. Prime Minister Narendra Modi is amongst the tallest leaders in the world, most respected. We have today a country which produces the highest number of STEM graduates every year. We have a country which is already growing at 6.5% a year, which will only get better in the years to come. We will, of course, have trading arrangements with other nations with whom we have complementarity rather than doing trade agreements with countries done as was done by the UPA, which really didn't help Indian business as much as it should have. Whereas on the contrary, if you see our trade agreements, even business today and India today could not find fault with it, despite your best efforts. So UAE, Mauritius, Australia, the 4-nation EFTA bloc, Switzerland, Norway, Liechtenstein, and Iceland, UK. We are in dialogue with many other countries, Oman, EU, US, Chile, Peru, many others, New Zealand, many others want to start engaging with India. So today the world recognizes the strengths of India, recognizes our demographic advantages, recognizes what 1.4 billion aspirational Indians bring to the table as demand. An aggregate demand that India has is a huge market. Why else do you think everybody is vying up to do trade or have better market access in India? Do you think, sir, that trade deal with the United States is still possible? As I said, we don't do negotiations in the media stage. लेकिन जो आपने भारत के किसानों की बात की, you spoke of our farmers and our dairy, you spoke of the Prime Minister's resolve. उनका एक चुनाव से पहले 2014 से पहले भी उन्होंने कहा था, सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं झुकने दूंगा. क्या एक साजिश है, क्या एक प्रयास है देश को झुकाने की, भारत को झुकाने की, या all your trading partners they respect our sensibilities on agriculture? मेरे भाई, आज तक ऐसा कोई नहीं आया है जो भारत को झुका सके. असंभव है. कोशिश करते हैं. कोई लाख कोशिश कर ले, भारत को कोई नहीं झुका सकता.
Okay, you said that we couldn't find fault, and I'm not asking you this question to find fault, but to address some concerns that we have had. And during this event, sir, we have had sessions where a couple of points were raised. One, with regard to the UK deal specifically, that we have given them far too much access, including access into government procurement. That's point number one. The second is that for certain sectors, including, for example, alcohol, there is again, India, according to that view, has given far more than it should have. What would you say to these two specifics? In fact, whoever gave you both these comments needs to go back to school. As regards your first point on government procurement, we have obviously opened up a large government procurement in the UK for Indian entrepreneurs. So it's a two-way traffic. Whoever it is, if he thinks that everybody should open their markets to India and India will not do anything for them, is living in a cuckoo's world. Very important point. And in any case, what India has done is protected all its MSME sector and the privileges or the priority given to MSME sector. That's all entirely protected. And we have only agreed to allow UK companies to be considered as a class 2 supplier, not class 1. Whereas in return, there's a social value regimen in UK which would restrict Indian companies from bidding in UK government procurement. That will not be applicable anymore. So effectively, we've opened up a larger opportunity for India's businesses in UK's public procurement. That's to your first question. The second question is absurd. And in fact, it is these narratives which has held back India for the last 25 years. This UK trade deal has taken almost more than 2 decades to happen. More than 2 decades of lost opportunities. Mark my words, lost opportunities. 2 decades of lost opportunities because this silly attempt to not allow alcoholic beverages to come to India. Now, mostly what UK exports are Scotch whisky. That's a GI product. It is made only in Scotland. There's a limitation to how much they can make. It's a labor-intensive industry. There's a very high cost of labor in those regions. Scotland probably more than UK also. Or rather, I mean, more than the London or the England region. And already, if you see the statistics, more Scotch whisky comes into the country through the duty-free shops at the airports than actually imported as Scotch whisky. The total import of Scotch whisky is probably 2,000-3,000 crores. Can you believe it? 2,000 or 3,000 crores is the total import. And that also largely comes in bulk, which means it is bottled in India. It adds business to our bottling plants. It adds business to our blending plants or whiskey making plants. Jobs are created in India. And instead of spurious liquor, there's a joke going around, I don't know how far it's true, and I have no way to verify it because I don't drink Scotch whisky. But I'm told there's more Scotch whisky sold in India than is produced in Scotland. I think you must have heard that. So would you rather not have that we open 1 or 2 sectors like this and in return get more than 99% access? Mind you, friends, more than 99% access, preferential access, in most cases zero duty access to a large market like United Kingdom, which is almost as big as the Indian market, with a per capita income of $50,000. People spending money at that level. What is ये कोई घाटे का सौदा दिखता है आपको?
2-2,500 करोड़ की मार्केट सेव करने के लिए हमने 20 साल लगा दिए ये ट्रेड डील करने में। कितना हम एक्सपोर्ट कर सकते थे 20 साल में, लाखों करोड़ों लोगों को नौकरी मिल सकती थी, हजारों कंपनियां खड़ी हो जाती, एंटरप्रेन्योर स्टार्टअप्स को कितनी अपॉर्चुनिटीज मिलती। इसका एक प्रकार से उस टाइप की नकारात्मक सोच का ये परिणाम है। तो आई थिंक इट्स एन एब्सोल्युटली वंडरफुल डील। Whoever has studied it, any economist, any newspaper, any editor, they have all appreciated that it's a win for India in a big way. In addition to that, what we have negotiated was beyond anybody's imagination. We have about 1 lakh people working on short-term visas in UK, and that number keeps growing. You are aware of that? Yeah. I'm sure, Siddharth, you are aware Yes. that the social security payment of these Yes. largely young people who work in UK, mostly in the IT sector and other areas, 12.5% is deducted from the employee's salary, 12.5% is paid by the employer. So 25% of your salary used to be paid to the UK Treasury. And since you didn't stay there for 10 years, which was a minimum period to get pension, that money was gone forever. These people never got any benefit out of 25% of that person's salary. They're all Indians working there. Now, and most of them go for 2 years, 3 years, short period visa. Now for 3 years, this entire money, instead of being paid in UK Treasury, can be deposited in the Provident Fund account in India, which will earn 8% plus tax-free interest for our youngsters. And that money will be yours. It will not be taken away by the UK Treasury. वो आपके बुढ़ापे का सहारा बनेगा, वो आपका सोशल सिक्योरिटी बनेगा। तो देश का कम से कम 8-10 हज़ार करोड़ रुपया बचेगा। इसमें बचाया गया है। अब बताइए, घाटे का सौदा है कि वो 2000 करोड़ की स्कॉच विस्की पे 150% लगे, वो स्मार्टर सौदा है। नहीं, वैसे और भारत में भी वो जो स्कॉच ड्रिंकर्स और जिन ड्रिंकर्स हैं वो तो बहुत खुश है। आप भी उसमें शामिल हैं। लेकिन क्या इस बहुत बढ़िया डील का फायदा उठाया जा सकता है कि जो इकोनॉमिक ऑफेंडर्स हैं वो वहां बैठ के स्कॉच और जिन ना पीते रहे और मतलब हमारा मजाक ना उड़ाते रहे? मैं ट्रेड डील करता हूं, बाकी प्रोसेसेस अपने दूसरे लोग देखते हैं। लेकिन यही जो भारत की शक्ति है, इसका हम लाभ उठा सकते हैं। द विजय माल्यास, द नीरव मोदीज एंड दोस 31+ पूरा इसके ऊपर चर्चा भी रेगुलर होती है। लीगल प्रोसेसेस के हिसाब से अवश्य ये सबको लाके न्याय दिलाया जाएगा। दैट शोज भारत की शक्ति 100% कि हम किसी के आगे झुक रहे नहीं है। तो आपने देख ही लिया। Piyush, since we are talking about, and you said that you are the commerce minister and therefore a trade negotiator, you've been to Harvard and clearly you know a thing or two about deal making. What I want to ask you here is, what are your tips to all those people, and there are a lot of people from business and I'm sure many more who are watching us live right now, who would want to learn a couple of tips from you, maybe the top 3 tips about the art of deal making? No, then let me clarify, I'm a dropout. I had only gone for a OPM program, which Kali has also done, but she's successfully completed and graduated. I'm a dropout. I could only do 1 module in 2000. Many dropouts are billionaires in the world. I think what matters most, and this is for the young people who are listening in into this program, what matters most to be successful is to be sincere, is to be honest, is to be upfront. And remember in life that a deal can only work when it's a win-win for both. It can never be a lopsided, one-sided relationship. If you respect the other person, you receive corresponding respect. And I think success in deal making is entirely
a result of sincerity, sincerity of purpose, sincerity of objective, and honesty in your dealings. And we don't let any external power decide who our friends are, who we go to, who we deal with. Boss, I know you are a veteran journalist, but I'm no rookie either. नहीं, क्योंकि मेरा एक प्रश्न और भी था आपसे, और अपार्ट फ्रॉम ऑल दीज प्रेशर्स, आपने डील की बात की. हम लोग जब विश्व में जाते हैं, सो पीपल टॉक वेरी हाईली ऑफ इंडिया एज अ डेमोक्रेसी, बट देन विद इन आवर कंट्री देयर आर दोज हु से इलेक्शंस आर rigged, election commission is rigged, election commission works at the orders of your party. Does that take away from the strength of our democracy? How would you respond to those? I think, these are such absurd comments that they only deserve to be condemned and not even responded to. B, अब जब हम कोई फल लेने जाते हैं या कोई दुकान में कोई भी चीज़ देखते हैं या डायमंड माइनिंग कोई लोग करने जाते हैं, तो एक खोटा सिक्का तो सब जगह किधर ना किधर निकल ही जाता है. अब कोई एक व्यक्ति अगर समझ के बाहर हो, जिसकी समझ इतनी छोटी हो, अब उस कारण तो मुझे नहीं मालूम है क्या है, उसके ऊपर हमें समय व्यर्थ करके देश को कोई लाभ नहीं होने वाला. पीपल हैव ऑल्सो गिवन अप, और उनकी खुद की पार्टी के लोगों ने भी उनके ऊपर उम्मीद छोड़ दी है. तो दे हैव डिसाइडेड कि हमको जीवन भर अभी ऑपोजिशन में रहना है. हो सकता है कोई नए युवा लोग अभी भी सोचते होंगे कि कभी ना कभी उनको नंबर लगेगा, पर ये परिवारवाद के रहते तो शायद वो भी संभव नहीं होने वाला है. तो ऐसी स्थिति में मुझे लगता है अब देश ने मन बना लिया है, अब विकसित भारत की तरफ बढ़े. ऐसे सब ये साइड क्या बोलते हैं इसमें, साइड शोज के ऊपर कोई टाइम वेस्ट करता नहीं है. अनाप शनाप झूठे आरोप के ऊपर कभी राजनीति नहीं चल सकती. इस प्रकार से भारत की इंस्टीट्यूशंस को रन डाउन करके कभी देश का विश्वास नहीं प्राप्त किया जा सकता. झूठे आरोप लगाने से कभी कोई सिद्धि नहीं मिल सकती. और इलेक्शन कमीशन तो पूरी दुनिया की शान है. आज दुनिया भर में लोग भारत के इलेक्शन के प्रोसेस को देखकर ताज्जुब करते हैं कि इतना परफेक्ट सिस्टम, इतना बढ़िया सिस्टम भारत जैसे देश ने इवॉल्व किया है. फेयर, फ्री, और वास्तव में अगर एक लाइन में देखें तो वो जिस प्रकार की बातें वो कर रहे हैं, वही तो रीज़न है कि SIR करना पड़ रहा है. तो अगर कोई डुप्लीकेट वोटर है, समझो मैं मुंबई से आता हूँ, मैं दिल्ली शिफ्ट हो गया, अगर मैं दिल्ली में भी रजिस्टर कर लूँ तो इलेक्शन कमीशन ने चेक तो करना पड़ेगा कि मैं मुंबई से डिलीट हुआ हूँ कि नहीं. अगर आई लॉस्ट बोथ माई पेरेंट्स, अगर उनका नाम नहीं निकला होता तो इलेक्शन कमीशन का जॉब है कि वो देखें कि कोई गलत नाम तो नहीं है. अगर कोई बाहर से आके भारत में बसता है तो स्वाभाविक रूप से उसने एक फॉर्मल प्रोसेस से भारत का नागरिक बनना पड़ेगा, फिर उसको वोट का अधिकार है. तो मुझे लगता है कि इलेक्शन कमीशन अपना काम कर रही है, अपनी नौकरी निभा रही है, अपना कॉन्स्टिट्यूशनल दायित्व, संवैधानिक दायित्व को निर्वहन कर रही है. हमें रिस्पेक्ट करना चाहिए. और ये फेक नैरेटिव के आधार पर, अदर देन योर चैनल, मैंने तो किसी और को दिखाया भी नहीं, देखा भी नहीं दिखाते हुए. आपको हेडलाइन नहीं मिल रही होगी तो आप अपना वो दिखाए जा रहे हो. कोई शायद अच्छी हेडलाइन मिल जाती है आज मेरे से तो ओवरराइड हो जाता है. आपसे बहुत अच्छी हेडलाइंस भी मिलती है और हम हर चीज दिखाते हैं सर, हर पहलू दिखाते हैं. नहीं, पर फेक नैरेटिव्स दिखाने का बीड़ा उठा रखा है क्या? आप कन्विंस हो क्या वो जो कह रहे हैं? तो फिर आप मेरे से सवाल पूछिए, किस हिस्से में आप कन्विंस्ड हो? कोई तो हिस्सा बताओ उस एटम बॉम्ब का जिसका कोई प्रभाव हुआ हो. आप मुझे पूछिए स्पेसिफिकली, क्या चीज़ में आपको लगता है कि उनके नैरेटिव में सच्चाई है? आई चैलेंज बोथ ऑफ यू. एक तो विषय बताओ.
Well, I think we'll leave that challenge for some other time. मतलब you don't have anything to say. And if you don't have anything to say, the least a responsible channel like yours, where people like Raj Chengappa are also editors, will sift the truth from the fake narratives. Fact check करते हो ना आप लोग? बिल्कुल जरा इसका भी fact check कर लीजिए. Piyush ji, we are out of time, but just one question, and I wanted to take this, and this is a very unique feature of one of the recent trade deals that we have done. Massive amounts of committed investment that will happen into India. I just want you to take a minute to explain that before we end. Friends, see, earlier we used to do free trade agreements, and we used to think that duty concession is the only element. हमारे गुड्स उनके देश में ड्यूटी फ्री जाए, उनके गुड्स हमारे देश में ड्यूटी फ्री आए, लेकिन या प्रेफरेंशियल ड्यूटी पे आए. ड्यूटी फ्री हर एक बार तो नहीं होता है, कई बार प्रेफरेंशियल ड्यूटी होती है. तो अगर हमारी नॉर्मल ड्यूटी 40% है, अगर हम 30% किसी को देते हैं तो हम प्रेफरेंस पे उनसे माल ले रहे हैं. पर अलग अलग देश की परिस्थितियां अलग होती हैं. जब एफ्टा कंट्रीज से हम नेगोशिएट कर रहे थे, 4 देशों का समूह, तो मैंने उनको कहा कि देखो, भारत आज $4 ट्रिलियन की इकोनॉमी, एंड वी आर द फास्टेस्ट ग्रोइंग लार्ज इकोनॉमी इन द वर्ल्ड. हमारे पास 140 करोड़ लोगों का डिमांड है, हमारे पास युवा शक्ति है, हमारे पास एक निर्णायक नेतृत्व है. वो शोले का किसका डायलॉग था? दीवार का डायलॉग. मेरे पास माँ है, आपके पास क्या है? आपकी इकोनॉमी तो इतना स्लो ग्रो कर रही है, आपके यहाँ पे तो एजिंग पॉपुलेशन है, आपकी इकोनॉमी ग्रो कर करके शायद 2047 तक डबल हो जाएगी. मेरी इकोनॉमी 8 गुना हो जाएगी, $32 ट्रिलियन की इकोनॉमी होगी. तो मुझे क्या दोगे जिससे विन विन सिचुएशन बने, जो आपने सवाल पूछा था. हाउ डू वी बैलेंस बेनिफिट्स ऑन बोथ साइड्स. मैं मेरे मार्केट में आपको अगर आपका सामान बेचने दूँ, और वैसे उनके यहाँ से जो सामान आएगा वो तो हमारे हितों का ही होगा. टेक्नोलॉजी, इनोवेशन, जहाँ तक डेयरी है, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स है, राइस, व्हीट, ये सब तो हमने खोला ही नहीं है उनके लिए. सब प्रोटेक्टेड है. किसानों के हित, पशुपालक के हित, हमारी एमएसएमई के हितों को संरक्षण पूरा रखे है. तो मैंने कहा हमें क्या मिल रहा है, तो वो भी फॉक्स थे. कभी आज तक हुआ ही नहीं है कोई, देयर इज नो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट इन हिस्ट्री जिसमें इन्वेस्टमेंट कमिटमेंट विदाउट अ बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी, और ऐसा कमिटमेंट कास्ट इन स्टोन कि अगर वो इन्वेस्ट नहीं करेंगे, भारत में नौकरियां नहीं क्रिएट करेंगे, तो मैं उनकी ड्यूटी कंसेशन वापस ले सकता हूँ. आई हैव अ क्लॉबैक क्लॉज. तो ये 4 देशों ने कमिट किया है कि भारत में $100 बिलियन यानी 8.5 लाख करोड़ रुपए वो भारत में एफडीआई यानी मैन्युफैक्चरिंग, इनोवेशन, रिसर्च, फाइनेंशियल सर्विसेज, आईटी, ऐसी ठोस चीज़ों में. इसमें स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट नहीं इंक्लूडेड है, वो एफआईआई इन्वेस्टमेंट होती है, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर. एफडीआई इन्वेस्टमेंट 8.5 लाख करोड़ की कमिट की है, जिससे डायरेक्ट जॉब्स 10 लाख होंगी. और जब 8.5 लाख करोड़ का एफडीआई आएगा तो कोई इंडियन पार्टनर साथ में होगा, वो निवेश करेगा, कोई लोन लेगा, इकोसिस्टम डेवलप होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा. यानी मेरा अनुमान है 50 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट इस एक एफटीए के माध्यम से आने वाले वर्षों में भारत में आएगा. 10 लाख जॉब्स तो डायरेक्ट होंगी, पर अगर डायरेक्ट इनडायरेक्ट मिलाएं तो 50 लाख नई नौकरियां भारत में बनेंगी. और ये 1 अक्टूबर से ये लागू होने वाला है. फ्रॉम 1 अक्टूबर एफ्टा एग्रीमेंट इज गोइंग टू कम इनटू इफेक्ट, और उसके सब लाभ आप सबको मिलना शुरू हो जाएंगे. Piyush ji, thank you very much for explaining that and taking us on a journey as to what our trade engagement will be at a pivotal moment for the global economy as we move towards 2047. Thank you very much for your time and for giving us all those headlines today. Thank you.
Thank you so much, Honorable Minister. Can I please request you to stay back on stage while I request Ms. Kalipuri, Vice Chairperson of India Today Group, to please present a token of appreciation to our honorable guest here.